यो 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 व्हाट्सअप गाइज आ गया है लाइव रिएक्शन। यहाँ पे हम देखने वाले हैं अभी। देखो गाइज यहाँ पे ये चल रहा है लाइव स्ट्रीम मार्वल फ्यूचर फाइट का। एंड यस क्या बोल रहा है ये, गेम मोड दिखा रहा है। ऑलराइटी लेट्स गो गाइज। थोड़ा सा लेट हो गया मैं, 2 मिनट। This new quest revolves around mutants who have sensed an impending danger, embarking on a journey to prevent it. In particular, at the center of this story is the Summers family. Will the Summers family be able to avert the danger facing mutants everywhere? And will they be able to reach a happy ending? Find out by participating भाई in ये यूनिफॉर्म भी आ रहा है क्या? ये हरी वाली लड़की का नहीं एक मिनट। एपिक क्वेस्ट लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। द गॉब्लिन क्वीन चैप्टर 1। Here we go. कौन है भाई? क्या? अरे भाई साहब ओके ठीक है। और ये स्टोरी हैवॉक को दिया इन्होंने स्टोरी में। Total of 55 quests. Nice blast type. Quest exclusive heroes like Havoc. You can just acquire Havoc. him real quick. Havoc क्यों बोल रहा है भाई? हैवॉक वो ब्लास्ट टाइप का है कैरेक्टर। You can also get the deluxe hero Hope Summers. डिलक्स हीरो होप समर। देखा मैंने बोला था लड़कियों को ये लोग ऐसे नहीं जाने देंगे। ये देखो As you can see, got lots of quests here. Plenty to do. Exodus, who can be acquired through the dimension shift, and lastly, डिमेंशन शिफ्ट से एक्सेडस मिलेगा। ओ भाई the final रिचल character, समर, Madeline किड Pryor, कैजुअल, who can be साइक्लोप। acquired by upgrading all designated characters to tier 2. You can also acquire Cyclops and Kid Omega Exogene at the stages for time travel. Lastly, we have another deluxe reward. साइक्लोप को यहाँ पे डाल दिया। Let's find that real quick for you. व्हाट? डिलक्स रिवॉर्ड क्या बोल रहा है? ओह ये वाला। ओ भाई गॉब्लिन क्वीन का mode has also been added in deluxe pack. So be sure to check out the epic Madeline Pryor. I think she looks pretty awesome. Have this nice little glow effect with her powers there. Yeah. But enough about that. Yeah. Let's take a I know closer English. look at the English heroes know who me. embark on the journey in this. ठीक है। अबे चश्मा नहीं लगाया यार, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। ओके हो गया खत्म। First, ओके कैरेक्टर के बारे में भी बताएगा। Epic Quest, you can obtain the new native tier 2 hero Havoc at 1 star upon entering and can upgrade him through the story progression. नेटिव टियर 2 Havoc, who absorbs cosmic energy into his body and transforms it into plasma, will be available for tier 3 advancement upon release. ठीक है, टियर 3 तक कर सकते हैं इसको। नेटिव टियर 2 है, टियर 3 तक जाएगा। टियर 4 कौन होगा भाई ये बता दे। He can be used in both PvP and PvE, but performs better in PvP. PvP में परफॉर्म बेटर करेगा, मतलब PvP कैरेक्टर। Absorbs a small percentage of energy attack, increases all basic attacks, also grants super armor, as well as other buffs you can check in game. Next up, we have this tier 2 passive, Control Advancement, which increases skill and bonus damage by a percentage, and decreased damage received by a %. And then his leader skill is called Energy Buster. Energy Buster leadership. Increase of energy attacks to all allies. बस Let's go ahead and check out a closer look at the powerful son of Cyclops. Son of Cyclops. ओहो मैंने गलती से बोल दिया था साइक्लोप का बाप, लेकिन ये साइक्लोप का बेटा है। ओके ठीक है। Comes in a little bit of a hero landing there. Okay, animation, skill animation. Jump right into it. Right here in the front, we have our first skill ready to go, which is Energy Bullet Wave. Okay, Energy Bullet Wave. भाई लोग लाइक कर देना। एकदम सुबह उठ के रिएक्शन कर रहा हूँ। मतलब हाँ यार, एक पहला फर्स्ट रिएक्शन का अलग ही मजा होता है। लाइक अगर इसको देख के मैं वीडियो बनाता तो वो मजा नहीं मिलता, समझ रहे हो ना? ठीक है। सब सो रहे होंगे भाई, दिव्यांशु भाई। ओके आई फ्रेम है थर्ड स्किल में। ओके कैंसिल करके इसका इफेक्ट चलेगा। Check it on the other side. Really like how he jumps back out of danger. Spinning shockwave applies stun, snare, and incapacitation while applying recovery HP. It increases all basic attacks based on accumulated inflicted damage. Next up, stay right here for skill number 4, which is Plasma Combination. Plasma Combination. Okay, I frame नहीं है इसमें।
ओ Plasma combination enables लास्ट में an attacking target that has ignore target effect. I fear him Applies ignore. silence, incapacitation, as well as silence and paralysis, and applies a percentage chance to penetrate barrier penetration, shield, I fear him all ignore damage दोनों है immune for skill among में. other Nice. buffs. Go here on the left. I fear him ignore penetration दोनों है for skill में. Favorite move of his. Not really any reason in particular, but just because. Nice, I nice. Like this. Okay, 5 skill. Absorbs some energy and then Energy absorption. Okay, nice skill, nice skill. इसको शायद से cancel करना पड़ेगा. have damage. This causes snare, incapacitation, and it also applies all damage immunity, increases all basic attacks, defense, and speed. All attack, all defense And का frenzy lastly, buff. we have his ultimate skill, maximum power. Okay, बस इतना ही है. Speaking of storing अभी tier energy, 3 की बात कर रहा है. shall we? Oh Maximum भाई. power release when using the tier 3 skill. Havoc concentrates energy in हैं, his right कुछ देखा सा नहीं लग रहा है. and dramatically releases it to crush his enemies. बस. Alright, हाँ, let's साइक्लोन go का ahead बेटा है and तो ऐसा jump थोड़ा. into the practice combo. We're gonna do things a little bit 3 different. 5 I'm 4. gonna go Okay, ahead and 3 test the cancel. skills out 3 myself delay नहीं. instead of 3 hitting cancel. the 5 preview cancel button. 4 ऐसा ही करेगा शायद से. Let's see how we do. Some of the rehearsals I did really good. Some I did 5 not को so शायद bad. cancel So करेगा we'll see तुरंत. how we go. 3, 5, and 4. If you always want to check out the other combos, as you know, check out the practice area yourself. Wish me luck. 3, 5, 4. Nope, that's a fail. Try it one more time just for the sake of practice. डिले नहीं किया इसने. Down. 3, 5, 4. Well, let me know Okay. what time I got them all right. बफर हो रहा है क्या बात कर. अबे यार ये नेट क्यों नहीं चल रहा भाई मेरा कल से. Power. ओके ठीक है इसका हो गया. पीपी कैरेक्टर है. ब्लास्ट Who चाहिए can था use यार. powerful telekinesis and चलो कोई ना. telepathy वो है ना. and brings out the Rachel powers Summer. of other mutants. She's also been released as a potential transcendence hero. ट्रांसेंडेंस कैरेक्टर है ये. ओके These moves here. ठीक है. Big fan of ट्रांसेंडेंस है. this one, there's like this afterglow, after image on her attacks. I think that's just really Oh, fun. oh. Great animation. Animation Something अच्छा for है. Myself, Hope Summers also has abilities. Absorb variant mutant abilities. Incorporate with Cable to attack enemies. She not only unites with Cable, but also collaborates with Rachel Summers and Kid Omega to unleash the power of the Phoenix Force during battle. ओके. रिचल समर और We're ये going to check out the Kid characters Omega for आएंगे leader इसके skill. weekend में शायद First से. one is called Last Hope. लास्ट होप. It ओके. has an increase to all basic attacks to all mutant allies, and a larger increase to her stepfather, Cable. Both her passive skills apply to self, called Future Training, and applies an increase to physical damage, physical attack, and ignores target dodge rate by a percentage. Okay, Her apply tier to 2 self, eh? passive is called Exact Attack. Okay. Increases guaranteed crit rate and increases skill and bonus damage. ओके. इसका लीडरशिप अप्लाई टू ऑल म्यूटेंट एलाई है तो ठीक है. Abilities and action, shall we? ओके. गॉब्लिन क्वीन का क्या है. अभी बताया नहीं है भाई. Alrighty. She comes into battle a little bit more subtle. ओके. Ground destruction quite yet, but I'm sure we'll see it here soon. First skill we have is called Instant Telepathic Blast. I might be in a little bit of a bad position, but let's check it out. Oh, it's not too bad. It also nicely gathers the enemies all together. बहुत अच्छा स्किल है. वन स्किल तो खैर बेसिक सही रहता है. Check it out over here one more time. Bam. चलो. Next up, now that we've rounded these guys up, we're going to do skill number 2, which is Ground Collapse. Again, also backs up, and there's ओके ये सही है. that beloved कम्बैट फीमेल में भी यूज हो सकती है. ground damage causes snare and paralysis. ओके. That's the guy on the outside, but that's okay. Over here on the left, these guys are going to check out skill number 3, which is called Ability Mimic. This is another fun एबिलिटी one. मिमिक. ओके. Some fire, some ice. ओके नाइस. एबीएक्स के लिए Ability एरिया Mimic ऑफ applies इफेक्ट अच्छा है. burn, shock, and silence, and decreases all basic. Running back up. कम्बैट फीमेल में यूज करेंगे इसको लगता है. We have Gatling combination. ओके. ओ ये तो रोक का स्किल लग रहा है भाई. ऐसा ही था ना रोक का एक स्किल लात मारने वाला. One more time. Gatling combination ये causes stun and और paralysis, ये. recovers a small amount of HP, and invincible for a few seconds, and increases all basic damage for one attack. ओके. इनविंसिबिलिटी And रिकवरी next है. up, we have skill number 5. We'll go over here. This is a nice little bundle of guys. This move is called Hope in Cable.
ओपन केबल, ओके केबल Cable चीजा आ jumps गए, in, causing burn and ओ bleed. भाई, Increases all basic attacks, defense, as well as speed. And ओके frenzy buff, Great. Let's check that one out one more time. And lastly, we have her awaken skill. Stay right here. ठीक है मस्त है, Easy. अवेकन स्किल देख लेते हैं, This is called Spark of Hope. And now we have mentioned Spark before, of a Hope. couple of the Oh, Phoenix nice. Force joining in the क्या battle. नाम देते हैं भाई ये लोग, ओके, This causes burn and fracture and Whoa, mind भाई. blast and applies crit rate यो increase among माय all गॉड, buffs. ओ And भाई it's साहब revenge. खतरनाक, अबे यार क्या अवेकन स्किल था यार, Longer one. ओ माय गॉड, हाँ here goes एबीएक्स में nothing. कम्बैट फीमेल में यूज हो सकती है भाई, 3 and 4. 2. 5 3 4, ओके, 3, 4. So close. बंदा खुद फेल हो गया, ठीक है, 2, 5 3. 3 4, अबे 3 को थोड़ा और डिले कर चीचा, Be sure to check out those combos for yourself. And we hope you look forward to trying out this. बोल रहा खुद चेक करना कम्बो, अरे मतलब ठीक है यार, हाँ इसको कम्बैट फीमेल में यूज कर सकते हैं, अच्छी लग रही है, Next up, we have 110 who holds the 110, belief that mutants are the superior beings destined to inherit the earth. He's यूनिवर्सल also हीरो, been added, and is one of the most powerful mutants alive. Exodus uses his powers to teleport and release energy. ओके एनर्जी He performs better टेलीपोर्टेशन, in PvP than PvE. PvP, yo, Nations here. His first passive is called Prophet's Will. Moves all active Remove all debuffs debuff, from okay. mutant allies. म्यूटेंट एलाई, ठीक है, His second passive skill is called Psionic Armor, which grants super armor, increases all basic defense. It also increases skill and bonus damage by a percentage. Super armor all as well as defense है, increasing damage received by a डिग्री percentage. डैमेज, And lastly, his leader skill Leadership. is called Power of the Leaf, and it applies an increase to all basic attacks based on the number of mutant allies you have in your team. So, for example, if you just have Oh, hi. one, you get a Must certain है यार, percentage. But if your whole team is mutants, you get a much larger. ऑल अटैक डैमेज मिलेगा, भाई साहब कतई खतरनाक, मैंने बोला था सेंट्री के जैसे होगा ये, मैंने बोला था सेंट्री के जैसे होगा, अभी पिछले वाले लाइव स्ट्रीम में बोला था, ओ भाई, Alrighty then. फक फक, His first skill. अब 6 स्किल नहीं है High इसका, speed flash, and as you would imagine, कतई it's pretty चूती है quick. भाई नेट मार्वल वाले, मतलब टीयर 2 पे Just like that, turn off the skill count. सिर्फ टीयर 2, One more time. High speed flash causes What? energy damage. भाई क्या कर लेगा ये टीयर 2 पे, Next up, skill number अबे 2, हट, Light of Judgment. अबे चूतिया काट दिया भाई, इतना अच्छा कैरेक्टर था, The gather of the power there hesitates for a second and slams down. Light of Judgment Mother- applies silence. सुबह सुबह उठने का Skill टाइम number खराब 3 कर is दिया यार called ये इसने, Shield of Belief. भाई 2024 में कौन देता है बे टीयर 2 कैरेक्टर, Authority. टीयर 4 का टाइम चल Shield रहा of है यार, Belief causes incapacitation and paralysis, recovers a percentage of HP, and barrier increases all basic अब attacks. चुप कर भाई, defense, कोई speed, दुनिया भर का and इसके crit पास में rate. इफेक्ट हो कोई मतलब नहीं है भाई, टीयर 2 पे क्या ही उखाड़ लेगा ये साला, कुछ भी लेके आए, Alright. I'm gonna say right here for skill number 4. बता रहा है इसके पास ये है वो है, मतलब कतई चूतिया बनती चल रही है भाई, Another good one that kind of gathers क्या कहना से? together there. Power Snare will apply silence and paralysis while granting Silence and invincibility paralysis and ये होगा increase वो all होगा, basic क्या ही कर damage लेगा by साइलेंस percentage पैरालिसिस for लेके, attack. And moving on to skill number 5. This is my favorite of his. हाँ हाँ तेरा तो फेवरेट है ही ना, तू तो 6 This one स्टार is कैरेक्टर called से खेलता है, Creation and लेवल Destruction. 60 वाले As से, you'll see in a moment why. He kind of pulls up, gathers up some materials, and creates this epic bomb and unloads on his enemies. अबे Creation and यार, Destruction will cause stun, burn, paralysis, and decrease all basic defenses among other buffs. We're gonna go and jump into his practice combos as well. And wish me luck. शुरू में इसने बोला था मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट सुपर हीरो एग्जिस्ट, यही है मोस्ट पावरफुल एग्जिस्ट टीयर 2, कतई पता चप्पल निकाल के मारने का मन कर रहा है यार इनको, 3, 5. मोस्ट पावरफुल I'm एग्जिस्ट too slow that time. That's okay. इन द अर्थ, Be sure to check out his पता नहीं combo. क्या, Maybe you'll master it. Any tips and tricks for timing are भाग जा भाई, इसको भगा दे यहाँ से, नजरों के सामने से आंखें दुख रही है मेरी, and we can't wait to see Exodus in action. वी कैन वेट टू सी एक्सिडस इन एक्शन, मतलब वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा And इसके, next, वो 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 the वो 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 new वो double cost native 2 tier 2 hero available in tier 3 is Madeline Pryor.
लास्ट म्यूटेंट फीमेल सुपर विलेन बनाया है इसको, हीरो नहीं बनाएंगे ये। हीरो बना देते तो एबीएल में यूज हो जाती, फिर She रोक can का be कट जाता। acquired, as you saw earlier, by upgrading all designated सबको heroes पता to था tier villain ही 2 है। in Epic Quest Goblin Queen. Now, Madeline Pryor was created through a genetic manipulation as a clone of Jean Grey, and she can materialize her own energy or use the goblins from the Limbo dimension to her leader skill is called Queen's Will. Queen's Will? This removes all debuffs Remove for all your debuffs for allies. leadership. And by looking at her passive and leader skills, you can tell she's going to be performing great in PvP. Yeah, PvP guys, yeah, PvP भाई साहब सारे PvP कैरेक्टर आ रहे हैं, मतलब ये पूरा एपिक क्वेस्ट PvP वाला होने वाला है। और भाई एक और जीन ग्रे आ रही है, तुम इसको कैसे मारोगे? स्पीड टाइप कैरेक्टर तैयार कर लो, स्पाइडरमैन को टियर 4 कर लो फटाफट। We jump right into it here. We have our first skill, which is a light touch. Okay, light touch. Bam. Light touch will apply जीन ग्रे का कॉपी है तो वैसा ही स्किल होगा। attack and energy damage. As always, turn off that color. Okay. Time for everybody. Okay. Awesome. All right, for this next skill, I'm going to go ahead and turn on AI for a second. ठीक है। This is a fun one. क्या काउंटर अटैक है क्या इसके? Turn around. Skill number 2 is called Thorn of the Abyss. वो क्या था ये? Nope, don't got me. Bam. Okay. Turn that off. They're all nicely glued together. बस वही Thorn of दिखाना the था। Abyss will counterattack enemies and attacks into the target, ignoring target's effect. It also applies bleed, incapacitation, and paralysis to enemies. सेकेंड स्किल में है आई फ्रेम इग्नोर काउंटर अटैक के साथ में। Immunity increases basic attacks for one attack. पेनिट्रेशन तो इसके टियर 2 पैसिव में है, मतलब पैसिव में है। Skill number 3, हाय which is called Summon Demon. Right there in the middle. Sure, let's go. बट मुझे सेकंड स्किल इसका इतना ज्यादा पावरफुल नहीं लगा। Goblin hands come up to assist her in battle. Summon Demon will apply bleed, silence, and decrease all basic defenses of an enemy. It applies barrier to self and accumulates pure damage when attacking, and increases all basic attacks based upon the accumulated damage. एक्युमुलेशन है भाई, डैमेज डेल्ट वाला। नाइस। Skill number 4. Since जीन ग्रे everyone's here, we're जैसा। gonna stay right in this little zone. Skill number 4 is called Wings of Vengeance. ओके 4 नंबर देखते हैं। This applies fracture, incapacitation, and panic to enemies. It grants Panic. HP recovery, invincibility, and increases all basic attacks, defense, speed, and crit rate. ठीक है, Right. रिकवरी Now, भी है skill number 4 स्किल 5 is में। called Goblin Queen's Wrath. स्किल नंबर 5। ओ ओ Wouldn't want to be caught up in those. यो ये spikes. तगड़ा स्किल है भाई, Let's do it right here in the center. ये तगड़ा स्किल है। All right. Goblin's Queen Wrath will apply bleed, paralysis, and incapacitation enemies, granting all damage immunity and increase in all basic attacks to self. And lastly, we have her ultimate skill. It's called Queen's Judgment. क्वींस जजमेंट ओके टियर 3 When स्किल। using the Tier 3 skill, housing massive psychic powers, Madeline भाई Pryor ये appears sitting in her ओ throne. भाई and जीन uses ग्रे her वाला, own energy to strike with ये किसका टियर 3 स्किल का था? time. ऊपर से गिरने, जीन ग्रे का ही था ना? दूसरे वाले ये किसका है भाई? ये ऊपर से गिरने वाला We're gonna go ahead and check out her अबे जीन dev ग्रे का ही था recommended ना? combos किसका as है भाई well. ये टियर 3 स्किल का There are एनिमेशन? 2 here. One is a little bit simpler one that I'll be trying, and there's another one with the ultimate skill अरे कुछ तो rotation. देखा देखा सा लग So रहा the one था। I'm doing is 3, 5, and 4. 3, 5, there's 4, another one okay. with 6, 3, 5, and 4. But again, we're gonna go with the easier one because we're still figuring this out. I should be better already. And 3, 5, and 4. Oh, There we go. yes, pro Success, friendly भी है। Finally. नाइस प्रो फ्रेंडली है तो देखते हैं। Awesome. We can't wait to see this powerful new supervillain in action. कूलडाउन काफी बड़ा बड़ा लग रहा है यार, 5, 16, 12, 14। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। कूलडाउन वैसे Alrighty. Lastly, स्पैम this ओके ये hero कौन has है? become even more Rachel powerful with the addition of Summer, a new yes. uniform. Rachel Summers of the Summer family has crossed through time and space एक to यूनिफॉर्म create a better future. ओके। Inheriting the power of her mother, Rachel Summers is a superhero who possesses the limitless power of the Phoenix Force. ओहो ठीक है। I personally am a big fan of hers. All of her powers are really cool. She summons the Phoenix or attacks her enemies using the fire of the Phoenix Force. She gives mind resistance and removes all buffs to Phoenix Force allies,
And her awakened passive is Phoenix Aurora, increases guaranteed dodge rate, increased skill damage. Okay. Her second passive is called Inherited Power, which grants immunity to mind control and charm effects with a high percentage chance to become immune to mind damage. And lastly, her leader skill is called Phoenix Majesty. When debuffed, increase mind resistance to all Phoenix Force allies, as well as removing debuffs. भाई इसका लीडरशिप चेंज कर दिया, रिमूव ऑल डिबफ Let's कर go दिया. ahead and also वाओ, check out her skills in game, shall we? सही है, सही है. म्यूटेंट एलाई बोला था ना इसने, अप्लाई टू म्यूटेंट एलाई. मादर, भाई मैं चप्पल निकाल के मारूंगा इन लोगों को, बता रहा हूँ. भाई मैं चप्पल निकाल के मारूंगा इन लोगों को. रिचल समर. Sonic debuff applies stun and deals fire damage. ब्लास्ट टाइप की है ना ये? एक मिनट, ये ब्लास्ट टाइप की थी ना? एक कैरेक्टर, Skill number 2 is called इस पे थोड़ा सा Burning भरोसा था कि Illusion. एबीएल के लिए एक ब्लास्ट म्यूटेंट कैरेक्टर मिल जाएगी हमको. Another one of those, dodging back after and होप समर को कम्बेट बना दिया, some damage. इसको Burning Illusion यूनिवर्सल applies बना दिया. burn, मतलब snare ब्लास्ट paralysis damage, सुपर हीरो and म्यूटेंट damage. दिया ही नहीं भाई. Third skill एक मिनट, मैं देखता हूँ. पहले ये ब्लास्ट थी ना, भाई ये मार्बल वाले ना, कसम से बता रहा हूँ मैं गाली खाने का काम कर रहे हैं ये लोग. stun, fear, रिचल snare, समर, एक मिनट. and decreases all basic defense to enemies and grants immunity to all debuff and increase in fire damage to self. रिचल समर, Alright, T over here on the left. Blast You type. guys deserve a little action as well. ब्लास्ट Skill टाइप. number 4 is called Phoenix Call. भाई Alright, and one more time. Phoenix Call decreases fire resistance and applies burn, mind control and incapacitation, paralysis, and gives invincibility to भाई ये yourself. ब्लास्ट टाइप थी, इसको इन्होंने यूनिवर्सल बना दिया. Is going to be Phoenix Awakening. Alright, so this one is a little bit different from her last skill 5s, and it's a fun one as well. I'm going to try to hit everybody in each region. Let's check this. भाई ये चीटिंग है यार, ये मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना कोई, हमको भी ऑप्शन दो भाई, कोई फीमेल कैरेक्टर दो भाई. Okay, let's try from the center this time to do that one. That was fun. भाई गॉट एमएफएफ, यस कर रहा है भाई. ये क्या बदतमीजी हो रही है भाई, सरासर मतलब जबरदस्ती एकदम से चल रहा है. This causes burn and stuns enemies and recovers a percentage of HP, increases all basic attacks, defense, speed, and crit rate, and also grants all damage immunity. अबे भाग And जा lastly, we भोसड़ी के, have her Awakened skill. कुछ भी बोल रहा भाई. Similar to the other members of the Phoenix Force, we have Phoenix Volcano. क्या ही करेंगे हम यूनिवर्सल सुपर हीरो लेके म्यूटेंट, कहाँ पे यूज करेंगे इसको? ऑल बस खेलेंगे, ऑल बस लेजेंड खेलेंगे, या फिर इसको अदर वर्ल्ड बैटल में यूज करेंगे? कहाँ पे यूज करेंगे? Crit rate, crit damage, ignores target. टाइमलाइन मिडल में तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, अवेकन कैरेक्टर है भाई. ये स्किल अभी ओके, अवेकन स्किल सबका सेम है. All the new characters coming to this update. We hope you look forward to checking her out in game. हाँ ठीक है, देख लेंगे इन गेम में. Alrighty. In this update, the only new uniform is going to be Rachel Summers from X-Men Days of Future Past, and the uniform options include यूनिफॉर्म ऑप्शन Colossus देख लो भाई लोग कि ये सब है. Kitty Pryde from the Red Queen, and of course, the family member Cable from केबल सही है Darkness. और Don't be क्लोसिस भी सही है, disappointed. Some डोमिनो great भी. news. There will be a 40% discount on X-Force all का? X-Men uniforms for this लेटेस्ट update. वाला नहीं है. So will Rachel पता नहीं. Summers be able to change the future of the mutant race? Well, now, before we move on, let's meet the heroes who have received a Tier 4 advancement Yeah. and potential transcendence. टियर 4 बता भाई. Right. Cyclops, who helps Professor X to lead the X-Men, What? has gained new powers, having become even more tough through Tier 4 advancement. He performs well in PvE, especially as a What? leader in support. Cyclops explosively releases his energy to unleash a devastating attack on his enemies. And of course, we have the mutant troublemaker. क्या चल Kid रहा है Omega. ये? He's also gained new skills. Being an Omega level mutant and telepath, Kid Omega unites with अबे Rachel चल क्या रहा है? Summers साइक्लोप टियर and 4 uses बिना the power of यूनिफॉर्म? the Phoenix Force to attack his enemies. And we look forward as अब well क्या to ही कर लेगा Cyclops ये? and Kid Omega, who also fight for the peace of mutants with their new powers. But it's not over yet, agents. New items that will further enhance heroes' performance have also been added to this update, so let's check them out. अबे भाई चूतिया बंदी चल रही है भाई, मार्बल फीचर और फाइट वाले पागल हो गए हैं.
5 new types of Odin's blessings will ले be बेटा, added. पैसा कमाने का New एक और Odin's धंधा निकाल blessings लिया। are flame, chill, न्यू ओडिन ब्लेसिंग, lightning, अब मराओ, poison, खरीदो। and mind, and each come with 2 options. All basic attack increase and elemental damage ऑल increase अटैक for their इंक्रीज वाला ओडिन ब्लेसिंग मिल रहा है अब तो। respective abilities. लाइटिंग New Odin's डैमेज, blessings कोल्ड will डैमेज, especially फायर make heroes डैमेज, with पॉइजन elemental डैमेज, damage माइंड even डैमेज, more एलिमेंटल powerful. टाइप ऑल For अटैक। example, Thor and Odin, who deal lightning damage. दो पैसा, दो पैसा, पैसा पैसा चाहिए इनको, पैसा काम नहीं करना है। साइक्लॉप को टियर 4 दे रहे, साइक्लॉप को सपोर्ट कैरेक्टर को टियर 4, So be sure to equip the new वो Odin's भी नए यूनिफॉर्म के, मतलब पुराने वाले यूनिफॉर्म के साथ में। Upgrade those heroes. All right. Along with the update, there'll be some various improvements that have also been prepared. So it's just क्या इंप्रूवमेंट किया है बता दे भाई, वो भी बता दे, थोड़ा सुन लेते हैं। All right. We're going to check out a new filtering feature similar to the one we use in the My Team has been added for those who have experienced difficulties finding heroes that meet conditions for challenges in the dispatch mission. अबे जावे More. कुछ भी मतलब। Go and check out abilities. हाँ Just take a random here, Cosmic Cube. You can now conveniently search for uniforms with the necessary options. ठीक है। हाँ बेचने वाला कारोबार तो करेंगे ही, वहां पे तो मेहनत करेंगे ही। Enter. अरे हम समझ रहे हैं तुम क्या दिखाना चाहते हो, चलो। Okay. Bam, bam. साइक्लोप से अच्छा डिस्टर को दे देते हैं। हाँ भाई, displayed in the character overview, so you can take a look here, click here, and check all the. भाई 110 को सिर्फ टियर 2 दिया है Use यार। your heroes with advantages and effects and abilities according to the situation. वे खेलना मत भाई, खेलना मत, टाइम पास मत करियो। All right. हाँ चल भाग यहाँ से। Let us know in the comments below what you think. ठीक है हम समझ गए। Alrighty, everybody. We have looked into the main changes of the January update so far, and of course, there'll be more details and improvements that were not discussed through the live stream. So be sure to check out the update details in the notice that we posted in the community forum. भाई And लोग now, the moment you've been waiting for. It's क्या? time for the कूपन कोड? event coupons. अरे कूपन कोड देने के लिए हल्ला कर रहा है, बताओ मालूम ऐसा लग रहा है क्या ही दे रहे हैं ये लोग। No, you are coupon code getting coupon. If you're an iOS and Apple user, check out the coupon registration page on our forum. हाय, Usually it's entered in the chat right now. मतलब समझते क्या है यार हम लोग को, ये मतलब कुछ भी चल रहा है। Goblin Queen. There we go. Right there. गॉब्लिन क्वीन, और इससे Goblin मिलेगा Queen, क्या all 5 one स्टार word, का and it's टिकट, valid 5 until स्टार कैरेक्टर। 1:13, 6:59 a.m. PST. So as you know, be sure to enter the code quickly since it will expire soon. Well, there you have it. Thank you for joining us. I hope you're excited as we are for the भाग जा भाई, January Goblin Queen update. भाग जा, Be sure to तुरंत भाग जा। आई एम नॉट एक्साइटेड एनी मोर। and next. भाई इन्होंने ना, सही बता रहा हूँ, हग दिया इस अपडेट में भी, एकदम पोट्टी कर दी है, बहुत तगड़ा वाला, सच बता रहा हूँ। साइक्लोप को टियर 4 क्या मतलब है भाई, कोई मतलब नहीं है। और ये 110 को टियर 2, भाई 110 को टियर 2 पे रखा है इन्होंने, क्या मतलब उसको टियर 3 देंगे मिड मंथ में, और फिर कोई दूसरा कैरेक्टर को टियर 4 ऐसा करेंगे? क्या जरूरत भाई, कतई चूतिया काट दिया भाई। ये क्या लड़की, क्या नाम है इसका, रिचल समर यूनिवर्सल बना दिया, बताओ। और वो जो दूसरी लड़की थी, ये मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ, ये देखो, ये है 110, इसको टियर 2 पे रखा है, ठीक है, यूनिवर्सल म्यूटेंट। और ये देखो इसको ये कम्बेट बना दिया होप समर को, मतलब नो ब्लास्ट म्यूटेंट कैरेक्टर, नो ब्लास्ट म्यूटेंट कैरेक्टर, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, अभी यहाँ पे ये कम्बेट हो गई है, तो मतलब म्यूटेंट सुपर हीरो फीमेल कैरेक्टर में पता नहीं ये कितना अच्छा काम करेगी एबीएल में, वो देखना पड़ेगा। बाकी ये भी है, क्या नाम है, एक लड़की अभी मैंने नाम लिया, रिचल समर, वो भी देखते हैं कितना अच्छा काम करेगी, यूनिवर्सल सुपर हीरो म्यूटेंट है तो काम करेगी, मतलब म्यूटेंट फीमेल सुपर हीरो वाले में। लेकिन अगर ब्लास्ट दे देते लाइक, तो हम दोनों तरफ यूज कर पाते ना, ब्लास्ट म्यूटेंट फीमेल एंड म्यूटेंट सुपर हीरो फीमेल, तो नहीं मतलब ब्लास्ट म्यूटेंट सुपर हीरो और फीमेल। खैर कोई बात नहीं, वहाँ पे केबल है अपना फ्री वाला, और इसका देखेंगे ये दोनों कैरेक्टर कैसे काम करते हैं। बाकी भाई क्या ही बताऊं, ये देखो हैवॉक ब्लास्ट म्यूटेंट मेल सुपर हीरो, ठीक है, और इसको पीवीपी बनाया है, जो कि अच्छी बात है। पीवीपी में कितना अच्छा करेगा ये देखना पड़ेगा। और ये होप समर है, कम्बेट म्यूटेंट फीमेल सुपर हीरो,
ये कम्बैट फीमेल वाले दिनों में कितना अच्छा काम करेगी ये देखना पड़ेगा। और ABL का कुछ इफेक्ट है या नहीं है, बहुत ज़्यादा इसने बताया नहीं स्किल वगैरह, तो ये देखेंगे। बाकी भाई साहब ये जो अपनी मेन कैरेक्टर है, क्या नाम है इस लड़की का, किधर गई, ओ अबे यार ये लड़की, इसका ठीक है, इसको PvP के लिए बनाया है जीन ग्रे 2.0 समझ लो इसको। मतलब अब टाइमलाइन बैटल में 2 जीन ग्रे आने वाली हैं। हाँ, इसके पास में रिवाइव है या नहीं है वो अभी जब पैच नोट आएगा ना तब वहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। पैच नोट में पूरा डिटेल देखेंगे क्या कुछ एबिलिटी है इसके बारे में, अभी आएगा उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, इसलिए इसका लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। बाकी गाइस ठीक है, देखते हैं ये अपडेट कैसा होता है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हाँ ठीक है वीडियो ही होगा पैच नोट का तो, या फिर लाइव स्ट्रीम कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय, सो जाओ, फिर से सो जाओ वापस से, जाओ, गुड नाइट।